अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ilm-o-taddabur में मोहम्मद आज़म ख़ान लाइव वीकली डिबेट के साथ एक दफ़ा फिर आपके साथ हाजिर हैं। आज भी हम, जैसा कि टाइटल आपने देख लिया होगा, कि आज भी हम हरकत ज़मीन के ऊपर बात कर रहे हैं। और आज हमें ज्वाइन किया है सैयद अतर साहब ने, जो कि पिछली स्ट्रीम में भी हमारे साथ ज्वाइन थे और काफ़ी इन्होंने अच्छे तरीके से जो है अपना मौक़िफ़ उसको डिफेंड किया। एक सवाल जिसके ऊपर हमारी लास्ट स्ट्रीम बंद हो गई थी वो था एरोप्लेन के हवाले से, जिसको मैं सैयद अतर साहब को ही मौका दूंगा कि वो उसको एक दफ़ा ब्रीफली रिपीट कर दें। और इसके बाद इंशाल्लाह ताला आज हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसको जल्द से जल्द, यानी एक पूरे टाइम में 1 घंटे के अंदर हम इसको कंक्लूड करें, ताकि आने वाली जो हमारी स्ट्रीम्स हैं वो कुछ हट कर दूसरे मौज़ूआत की जानिब भी की जाएँ, क्योंकि कंट्रोवर्शियल मौज़ूआत बहुत सारे हैं। तो शुरू करते हैं जी। हमारा थोड़ा सा मैं बता दूं कि हमारा जो हरकत ज़मीन के हवाले से चल रहा है सिलसिला, वो जहाज़ों की परवाज़ के हवाले से चल रहा है कि अगर ज़मीन हरकत करती है तो जहाज़ जो हैं फ़्लाइट टाइम्स उनमें ख़ासी कमी आ जानी चाहिए। ख़ुसूसन जो ज़मीन है वो मगरिब से मशरिक़ की जानिब रोटेट करती है, और अगर जहाज़ इसके उलट सिमत में चले तो फ़्लाइट टाइम में अच्छी खासी कमी आ जानी चाहिए। आज का जो टाइटल मैंने दिया है वो है कराची से रियाद तक, यानी रियाज जो शहर है वहाँ तक की जो फ़्लाइट है वो हरकत ज़मीन के नज़रिए को कैसे तबाह करती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे नज़रिए के मुताबिक ये है कि अगर ज़मीन रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है, और एरोप्लेन जो कराची से मगरिब की जानिब जब वो ट्रैवल करेगा तो कराची और जो रियाज है वो तकरीबन एक ही सतह के ऊपर हैं, तकरीबन 25 नॉर्थ लैटीट्यूड के ऊपर तकरीबन। और यहाँ पर ज़मीन की जो गर्दिश है उसकी रफ्तार है 1500 किलोमीटर फ़ी घंटा। तो अगर एरोप्लेन यहाँ से उड़ता है तो इनकी जो टोटल फ़्लाइट टाइम है, टोटल जो इंटरनेट पे बताई जाती है, वो 3 घंटा 10 मिनट है, कमो बेश। तो अगर ज़मीन 1500 किलोमीटर की रफ्तार से जहाज़ की तरफ आ रही है, और जहाज़ भी तकरीबन 800 किलोमीटर, बोइंग 777 इसी तरह के मॉडल इसमें चलते हैं, इस फ्लाइट में मैंने चेक किया था। तो 747 भी होता है, 777 भी होता है एक्सक्यूज़ मी। तो 800 किलोमीटर जहाज़ भी फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रहा है, 1500 किलोमीटर ज़मीन भी आ रही है। तो ये फ़्लाइट टाइम 3 घंटे 10 मिनट से शॉर्ट होकर तकरीबन 52-53 मिनट्स तक रह जाना चाहिए। इसमें जितने भी लोगों से ये सवाल किया जाता है तो सबसे पहला रिबटल, सबसे पहला रद्द, जो कि पिछली 2 स्ट्रीम्स में भी लोगों ने शेयर किया, वो यही आता है कि ज़मीन और ज़मीन का एटमॉस्फेयर जिसमें जहाज़ उड़ता है, ये सारे एक ही सिमत में लॉक्ड होकर वो चलते हैं। अगर एरोप्लेन यहाँ पर है तो ज़मीन के साथ साथ एरोप्लेन चल रहा है। तो इसके ऊपर हमारी जो पिछली स्ट्रीम में बहस सैयद अतर साहब के साथ और सलमान साहब जो भी लोग ज्वाइन किए थे वो हुई थी, वो यही थी कि यानी कि कोरियोलिस इफ़ेक्ट के ऊपर डिबेट चली थी। और कोरियोलिस इफ़ेक्ट में हमने बात की थी कि कोरियोलिस इफ़ेक्ट के मुताबिक अजसाम के नीचे अलहदा से ज़मीन घूमती है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता बल्कि 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। और उस पर सैयद अतर साहब ने ये रिबटल दिया था कि जहाज़ जो है, अगर वो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में जहाज़ जब फ्लाइट करते हैं तो उनको एडजस्ट करना पड़ता है, अगर वो एडजस्ट ना करें तो उनके नीचे जो है ज़मीन वो अपनी मंजिल से हट जाएंगे। यहीं तक मैं बात करूँगा। इसके आगे सैयद अतर साहब को मौका देता हूँ कि वो इसमें, अगर मैंने कोई चीज़ मिस की है, वो कुछ ऐड करना चाहते हैं इस पॉइंट के ऊपर, या वो दोबारा किसी चीज़ जो कि हम इग्नोर कर रहे थे पिछली स्ट्रीट में की या आज भी की है, तो अतर साहब प्लीज़ 1-1.5 मिनट में जो आप ऐड करना चाहते हैं ज़रूर करें। थैंक यू जी अतर साहब। जी जी, जज़ाकल्लाह आज़म भाई। अच्छा आज़म भाई, लास्ट टाइम भी मैंने यही ज़िक्र किया था कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक बात की थी इसकी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जब ज़मीन आपकी 1600 1500 और जैसे जैसे ग्लोब के मॉडल में बताया जाता है कि डिफाइंड है कि 1600 कुछ स्पीड से शुरू होती है और पोल्स पे जाके ख़त्म हो जाती है, जीरो पे आ जाती है। तो वहाँ पे ये है कि अगर आप किसी भी सिमत में या हवा में मौलक है ना, तो आप भी ज़मीन के साथ उतनी ही स्पीड में रफ्तार पे चल रहे होते हैं। ठीक है, इसकी मिसाल आसान कर देता हूँ। एक और तरीका, कभी आपने बंदे को 5 10 या 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रेडमिल पे भागते हुए देखा है आपने? ठीक है,
अगर आप उसको ट्रेडमिल पे भागते हुए देखें तो जो ट्रेडमिल है उसकी स्पीड आप देखें कि अगर 15 है और बंदे की स्पीड ही 15 है, तो वो बंदा आपको वहां पे साकन नजर आता है। ठीक है, वो कहीं आगे या पीछे नहीं हो रहा होता। अगर वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा ट्रेडमिल से तो आगे चला जाएगा, अगर वो अपनी स्पीड कम करेगा तो ट्रेडमिल उसको पीछे घसीट लेगी। इसी तरह अगर जमीन आपकी 1600 की स्पीड पे एक जगह घूम रही है और आप उसके साथ भी 1600 की स्पीड पे घूम रहे हैं, सिर्फ मसला ये है कि आपको वो जमीन इसलिए हरकत होती हुई नजर नहीं आती या महसूस होती क्योंकि जमीन की जो मूवमेंट की स्पीड है और उसका जो साइज है, असल में स्केल जो है वो इतना बड़ा है कि आपको उसकी वाइब्रेशंस या एक कांस्टेंट स्पीड है, जो पहले भी आपको बताया था कि एक ट्रेन 400 किलोमीटर की रफ्तार पे जा रही है और उसके अंदर आप भाग दौड़ रहे हैं, तो आपको बच्चे खेल रहे होते हैं, वो कभी गिर नहीं रहे होते। ठीक है, वो उसी की स्पीड से चल रहे होते हैं। तो चाहे आपकी स्पीड जब तक 1600 के बराबर नहीं होती, तब तक आप उसकी स्पीड से आगे या पीछे ट्रेवल नहीं कर सकते जमीन की। अगर आपकी स्पीड 1600 किलोमीटर पर आवर, या जिस तरह हम रियाद की एग्जांपल दे रहे हैं कि 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो जब तक आपके जहाज की स्पीड उससे ज्यादा नहीं होगी, तब तक आपकी टाइम में फर्क नहीं आएगा। आप जमीन की रफ्तार से ही मूव करेंगे। ठीक है, उसके अंदर अंदर ही मूव करेंगे। इसकी वही एग्जांपल्स पहले वाली, जहाज के अंदर घूमने फिरने की, भागने दौड़ने की, और ट्रेन के अंदर भागने दौड़ने की, कि अगर एयर होस्टेस एक जगह से निकलती है या जो वहाँ पे उसमें जो ख्वातीन होती हैं जो ट्रेन में सर्विंग कर रही होती हैं, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं, ट्रैवल करके वापस आती हैं, तो उनके टाइम में फर्क नहीं आएगा। वो ट्रेन के साथ या जहाज के साथ ही मूव कर रही होती है। दैट्स इट, थैंक यू। जी, आपने भी वही खुलासा कर दिया जो कि मैंने खुलासा किया था। और जी, जो है, अच्छा, ये अरविंद साहब ने भी। कोरियोलिस का थोड़ा सा बता दूं, सॉरी वो भूल गया था मैं। जी जी, प्लीज कोरियोलिस का इस प्लीज। तरह है कि जब आप लैटिट्यूड्स में चेंज करते हैं ना, लैटिट्यूड्स में चेंज लेते हैं और लॉन्गिट्यूड्स में मूव करते हैं, तब आपके कोरियोलिस इफेक्ट आता है। अगर टेक्निकली आप सिर्फ लैटिट्यूड पे मूव करेंगे तो कोरियोलिस इफेक्ट जीरो होता है, क्योंकि आपकी जमीन की स्पीड वहां पे जीरो है, टेंजेंटल स्पीड जो वेलोसिटी कहलाती है। जैसे ही आप लैटिट्यूड चेंज करेंगे, तो क्योंकि आप ज्यादा स्पीड वाले जोन से निकल के कम स्पीड वाले जोन में जा रहे हैं जहाँ पे टेंजेंटल स्पीड कम है, जैसे इक्वेटर पे 1600 है, आप सऊदी अरब जा रहे हैं, रियाद या कराची जा रहे हैं, वहां 1500 है, तो आप आगे चले जाएंगे उस लोकेशन से। सही है, क्योंकि वहां की स्पीड कम है टेंजेंटल। तो ये मैंने बताया था, कोरियोलिस इफेक्ट इस तरह डिफ्लेक्शन करती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डिफ्लेक्शन आती है अच्छा, एक। जब आप लैटिट्यूड से इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं। शुक्रिया। अच्छा, आरविन ने हमें ज्वाइन किया है। आरविन, इफ यू कैन हियर अस, वी कैन टॉक इन इंग्लिश फॉर फ्यू moments. I have given the link in the chat. You can join us, and I would love to hear a few comments from you. Okay. Okay. Arvind says that he does not understand. अच्छा, कोई लिंक जो है, मैं आई थिंक दोबारा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ चैट में। अतर भाई, ये चैट में से आप ये कॉपी कर सकते हैं लिंक? ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा मेरे स्ट्रीम यार्ड का? चैट में से कॉपी नहीं होता मेरे ख्याल में। चैट में से कॉपी नहीं होता? अच्छा, इनवाइट मुझे दोबारा भेजिए। यूट्यूब का लिंक भेजने, उसमें मौजूद है ना लिंक। हाँ, मैं दोबारा भेज रहा हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ से। Okay, let's see if Arvind joins us, and then we can continue our chat for continue our discussion for a few moments in English. And I would really love to have an input from Arvind. Arvind, just to let you know that what we are talking about is the spin of the Earth, and I'm raising a point here that if the Earth was spinning from west towards the east, the flight times, they must be reduced. And because we are living in Pakistan, and we have a city here, Karachi, and if a plane takes up from Karachi and it goes to let me see. Oh, Arvind has joined us. Hi, Arvind. Welcome to our channel. I'm so excited to have you here on our show. This is a really small channel. I have very few people here, but it's really exciting that you have joined us, Arvind. Yes, hello.
Thanks for having me. I was just popping by, caught your live stream, and thought, hey, let's see what this is Wow. going to be. Yeah, but Yeah, that's you're a very small channel, and I don't really get why, because your stream seems to be very good, from what I heard from my Indian friend, who also speaks Hindi, and yeah, I know, like their flat Earth is very popular in Pakistan and in India. It's growing fast. So Tarek says, like, yeah, in just a few years, it could be 1 million people if yeah. if YouTube allows it. Yeah, that's why I've started this effort, because there are lots of people in Pakistan and India and this region who are interested and who are really questioning the mainstream narrative. And when we talk to them, they really agree with us. But people are really shy and they don't want to come on, to make a channel. They don't want to discuss it on YouTube. I mean, we have lots of people on our official Facebook group, and people would argue that the globe believers would argue with us a lot. Like they will not budge from their point that the Earth is flat or the Earth is not spinning. But when I invite them to please come on to show our discussion, they are a little hesitant. So just to give you a brief introduction about today's topic, and I would love to have your input as well. Uh, I have raised this point that if the Earth was spinning and there's an airport in Karachi, one of the city of Pakistan, and if a plane takes a flight from Karachi and goes to Saudi Arabia or Riyadh, which is also a city in Arab, and the total flight time is 3 hours 10 minutes. But if the Earth is spinning beneath the aeroplane, the flight time should be reduced by, almost to like 80%, and total flight time would be 53 minutes. I've calculated that myself. And again, like like on Nathan's show, like every other glober will say, every other stationary Earth believer would say that the Earth and the atmosphere is moving together. You know, Ha! Yeah, 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 uh, yeah. yeah. My friend Sayyid Atar was also saying this, that if you are moving in a train, in a bus, the waitress would serve you coffee and drinks, and it doesn't affect them. And I just raised the issue, and I'm going to play the video here as well. And I would love to have your input. That Neil deGrasse Tyson's video, where is it? Yes. That way. And So it's playing in background, and please give us your input. Yes, yes, of course. So I've heard all those arguments before. I mean, I've been doing this for, what is it now, 6 years? I've heard it all many times. So this is the thing about the Globers specifically. They always, even when defeated in their arguments, they just wait some time and then they start over making the same arguments. So first you disprove, for example, the curvature, that the horizon is geometric through a black swan observation. And then they say, oh, it's refracted. But then after a while, you bump into them in some chat room and they're talking about, yeah, but that boat's going over the horizon. So it's like they forget and they start over and over and over again, right? But when it comes to the Coriolis effect, uh, it's a very silly trend from people that have engaged with flat earthers in debates and all that they now claim that there is no Coriolis deviation because the air moves in lockstep. This is physically impossible because air is very different from liquid and from solids. It has no susceptibility to momentum. So if you throw a rock, its path will continue because it has momentum when you release it from your hand. So does a glass of water. You hold the glass, you throw the water, it will keep moving. Gas doesn't do this. It has no momentum. It will only respond to the local air pressure differential of its direct surroundings. So a front of wind could move, but it's because it is pressured entirely and it's pressed to move to the lower pressure, right? And it's a lot of it, so it'll keep moving.
But on a small scale, if you move your hand really quickly, you feel a slight gust of wind because right at your hand where you're moving towards, it's slightly bigger pressure and it's trying to equalize right around your hand. It doesn't, however, continue on when you stop moving your hand because immediately it's equalized. The pressure is equalized. It doesn't keep moving. Gas does not have momentum. And thus, the argument that some ballers say it moves in lockstep, this is physically impossible. You cannot demonstrate this even if you have for example, a centrifuge right in front of you. You close it off completely. You have sand, water, and air in there. If it's going to spin, the water is going to start moving in lockstep. The sand is going to move in lockstep, but the air will not unless you close off compartments within the rotatory setup, and then the entire compartment will just keep pushing the gas forward. Now, this also happens in a closed-off train, because if it did not have a top, the waitress would be competing with the wind as she's trying to carry the drinks to the customer, right? But it's because it's closed off that the whole compartment pushes forth the gas within the moving setup. And that's why there's slightly more pressure at the back than there will be at the front, even just slightly. There always will be if it's closed off. So I hope that's a good answer. Yeah, that's really, really awesome, and that's really something new for me, and also for lots of people here in Pakistan, because I've been saying this a lot, that like gas is like unbounded molecules and it has to move freely. How can we say that okay, it's like really velcroed together with the earth? So, but as you are aware, I've been listening to lots of flat Earth debates on Nathan Oakley's channel, and everybody who's listening to me who can understand English, please listen to Nathan Oakley's channel and also Arvin's channel. He has awesome stuff on his channel. Sometimes Arvin talks really some philosophical views which I really like that lets you think about the nature of our reality. Arvin, wow, thank you. I didn't know you watched my channel. I feel honored. I've been watching your channel, Adam Meekan's Quantum ریاض. I mean, I was introduced to all you guys' channel from the Nathan Oakley's channel. So yeah, it's been a real pleasure. Arvin, I just want to add one more clip here. So I was listening to this clip, and at the end here, if you would focus, like we all know that he's talking about the Coriolis effect and the ball being talking about two reference frames. Like people would say that things are in the one reference frame when it comes to the flights, and suddenly Neil deGrasse Tyson says, like you can see on the screen here, he is advising the kicker that to make your goal to the post, you need to kick a bit left, and the earth will bring it to the right for you. These are the words. So I'm going to play that again, and you can just I have put like captions and Urdu subtitles as well, and just focus right here. I've slowed the video a bit also. So here he's talking about his tweet. Yeah, I remember that. We've discussed that a lot on the Flat Earth debates, because it is because here's why. Look, Neil deGrasse Tyson is making a correct claim for the globe cosmology. The thing is, though, that would have more consequences, right? If a football is going to deviate because of the Coriolis deviation of the Earth spin, then so would everything else that is not physically attached to the Earth. It would also rotate. A drone that would float, a balloon that would drift. It would all separate itself from the rotating Earth and then, rotate
or seem to rotate above it while the Earth is rotating underneath, just like the football. That's Neil deGrasse Tyson doesn't bring all that up. He just gives the example of the football. This is the correct claim for the globe cosmology. If the Earth was a spinning globe, then he is correct. But the problem is, in reality, it doesn't happen at all. It's a complete nonsense story, and people know that, and they realize the consequences. Planes don't deviate, drones don't drift, balloons don't drift. So they make up their own story, and we call that at the Flat Earth Debate anti-Flat Earth narrative. It's what they make up themselves. It's wild. It's feral. It's crazy. It doesn't actually hold to the rules of the model. So they're in the wilderness. They're just feral. And it's incorrect. If they say it moves in lockstep, that's incorrect. They don't understand the globe model. That's the reality. Yeah, so you can see on the screen here that the Earth will then bring it back to the right. So the ball is in the air, just about like maybe 5 to 6 feet, at the most 7 feet, and the Earth is bringing the goalpost towards the ball, but why not towards the plane? He's saying it right in front of us. I mean, how can we not focus into this? Well, because it's just so fascinating an idea, You're trying to imagine the Earth is a ball spinning underneath things. And that requires a lot of imagination to focus on that. If you're zoned in your imagination, the Earth is a ball. I'm seeing it in my mind. I'm seeing it spin slowly, and everything above it is drifting. While you're imagining this, while you're doing that, because he's brought it up, he gave you an example. So you're thinking about it. Now he's just talking like, oh yeah, look at this and that. And he cuts it off, right? Because you're still caught in imagining. He points at a problem, but then he doesn't address the problem, and it just moves on. So you keep dreaming. He caught you. He caught you in the dream through his example. And then he can play around because you're in the dream now. Exactly. Thank you so much, Arvind. I really, this is huge for me. I mean, I have just many few people, and to Arvind to join us and share his opinions, it's really huge for me. Thank you so much. I cannot thank you enough. So, I'm very happy to be here. It's been a pleasure. Thank you very much for having me. Thank you. ओके जी, हम यहाँ से अब उर्दू में स्टार्ट करेंगे। आप सब अहबाब का जिन्होंने वेट किया, तो यहाँ पे यही हम बात कर रहे थे। अतर साहब और सलमान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अतर और सलमान, देखें, आपने भी पिछली स्ट्रीम में भी यही बात की थी, और ये मैंने स्क्रीन को आपके आगे रोका हुआ है। सवाल आपने इंग्लिश में भी मेरा सुन लिया होगा। आप कहते हैं कि जहाज़ जो है वो हवा के साथ लॉक्ड में चल रहा है, और जैसे एरोप्लेन में चलता है वो तो एक क्लोज्ड एटमॉस्फेयर है। तो लेकिन आपके कोरियोलिस इफेक्ट में, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी नील डिग्रास टाइसन की, ये 4 साल पुरानी वीडियो है, और भी वीडियोस हैं, मैंने पहले भी चलाई हैं, इसके पहले भी ट्वीट्स हैं, कि जब बॉल को वो किक मार रहा है और उसे लड़की पूछ रही है कि आप किक मारने वाले को क्या टिप दोगे, तो वो उसे कह रहा है कि जो किक करने वाला है वो गेंद को थोड़ा लेफ्ट में रखे, बाय द फ्रैक्शन ऑफ एन इंच, वो लेफ्ट में रख के उसको किक करे, द अर्थ विल देन ब्रिंग इट बैक टू द राइट फॉर यू। इसका मतलब है कि बॉल और अर्थ, दीज आर 2 डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम्स, और बॉल अलहदा मूव कर रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ऑफ द अर्थ्स रोटेशन बीनीथ द बॉल। तो यही बात आप जहाज़ों के लिए क्यों नहीं मानते? अगर जहाज़ भी मूव कर रहा है और वो 30,000 फीट की बुलंदी पे मूव कर रहा है, तो 5-6 फुट की बुलंदी पे तो बॉल और अर्थ अलग-अलग मूव करें, और इतनी ज़्यादा बुलंदी के ऊपर ये कैसे एक साथ मूव करें? अतर भाई पहले आप, उसके बाद सलमान साहब से मैं। Right. By the way, I didn't get any of that. I take you're trying to translate what we talked about before this. But yeah, I just wanted to say it's a good stream. I like your background, your video work, what you do with it. It's good. But your mic, it really has a buzz. Zzz.
Would there be anything possible for you to do about that? Yeah, Arvin, I'm trying. I was just in the market a few days ago, and it's really hot in Pakistan right now, and I have two fans running in the back at the back of Oh. at the back. So yeah, that's why probably if I'm going to turn towards the fan, there will be a lot of like more distortion. But I'm trying to get new mic for that as well. So yeah, hopefully I will resolve the And issue. yeah, because I use OBS for my shows, and it has like noise filters. It works really well. But I can't find that in the settings here in StreamYard. So noise filters probably would do a lot of good. It's free. You might not even need a new mic, although would never do any harm. Anyway, sorry to get all technical on you. जी अतर भाई आपने पॉइंट सुन लिया होगा मेरा, तो प्लीज अतर भाई आप क्या ऐड करना चाहेंगे? हेलो हेलो You talk to me? अतहर Oh. ओके, अतर भाई या सलमान, कौन कौन है स्ट्रीम में? सलमान, फिनिक्स और अतर। अच्छा ठीक है, सॉरी। आवाज आ रही है? जी जी अतर भाई आपकी आवाज़ आ रही है। जी अतर और सलमान, आपने पॉइंट सुन लिए, आरविन के भी पॉइंट सुन लिए। आरविन ने तो जो बातें की हैं उसमें हवा के हवाले से, उसके ऊपर तो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो स्क्रीन के ऊपर जो आपने मेरा पॉइंट सुना, मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे। अच्छा, मुझे थोड़ा ये बताएं कि आवाज भी हो गई थी। जी जी लाइव फीड में कह रहा हूं कि मुझे फीड नजर आ रही थी। एक मिनट। हेलो, जी जी अतर भाई आवाज़ आ रही? आवाज ठीक आ रही है? जी आपको मैं सुन पा रहा हूँ बिल्कुल ठीक तरह से। अच्छा आजम भाई, मैंने आपसे पहले ही बताया कि लैटिट्यूड पे जब आप मूव करते हैं, ठीक है, जी जी परपेंडिकुलर, जब एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड में शिफ्ट करते हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को, प्रोजेक्टाइल को, जहाज की मिसाल ले लें, सिंपल मिसाल होती है इस तरह, फुटबॉल की मिसाल जिस तरह है। फुटबॉल जो है ये अनगाइडेड प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है। मान गए आप इस बात को? जी अतर भाई आप अपना पॉइंट कंप्लीट करें। अच्छा जी, जो अनगाइडेड ऑब्जेक्ट है, इसका बॉल है, गोल्फ की बॉल है, गोली है, जो तोप से निकलता हुआ गोला होता है, उन सब की मिसाल इसी पे अप्लाई होती है कि जब आप लैटिट्यूड में मूव करते हैं तो कोरियोलिस की वजह से आप ईस्ट की तरफ आपका ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, ठीक है। उसमें डिस्टेंस भी होता है, उसमें स्पीड भी होती है। अब आपने बॉल की एग्जाम्पल ले ली, वो आपको समझाने के लिए बता रहा है। फुटबॉल आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर भी नहीं, 20-30 मीटर की दूर आप कर सकते हैं, जबकि गोला है, अगर आप से निकलता हुआ, गोल्फ की बॉल 300 मीटर तक, यार्ड तक जाती है, वहां पे भी अगर कोरियोलिस अफेक्ट करेगा तो थोड़ा सा करेगा, और अतर लैटिट्यूड भाई पे अक्रॉस करता है, अतर लॉन्गिट्यूड पे नहीं करता। अच्छा बात सुनिए, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है। देखिए आप फिर उसी बात को दोहरा रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना बताइएगा अभी, हाँ या ना में, क्या जब बॉल हवा में होता है उसके नीचे जमीन सेपरेटली रोटेट करती है कि नहीं करती? आजम भाई, मैं अपने आपको दोबारा रीज्वाइन करता हूँ जब तक आप ये सवाल आगे पूछें। जी मैं आपको रीज्वाइन करता हूँ ऐप बंद करके, जी आप जब तक ये सवाल सलमान भाई से कुछ और से पूछें। जी ठीक है। जी सलमान भाई आप बताएं, अतर भाई दोबारा ज्वाइन करेंगे। आप बताएं कि ये जो बॉल है, ये कोई भी जिस्म है, ये एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव करता है अर्थ के साथ, या ये दो रेफरेंस फ्रेम हैं? ऑब्जेक्ट्स हवा में अलहदा मूव करते हैं और अर्थ अलहदा मूव करती है, क्या कहते हैं?
पहले आपकी बॉल वाली बात की तरफ मैं आता हूँ। वो डिपेंड करता है कि बॉल कितनी हाइट और कितने डिस्टेंस के लॉन्ग मूव करेगा। सेकंडली ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पे काम करेंगे। एक मिनट ओके, ठीक है। कोरियोलिस ये जो इफेक्ट है ये हाइट और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है? जी हाँ, हाइट पे भी डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा और आपकी ग्लोब पे लोकेशन पे भी डिपेंड करेगा कि आप लैटिट्यूड्स के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूड्स के लॉन्ग मूव कर रहे हैं। यार तो आप एक कितनी मिनट ओहो सलमान भाई ओके, अच्छा ठीक है। अगर कोरियोलिस इफेक्ट अब में अगर फासला फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि एक ख़ास हाइट और ख़ास डिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट करेगा, ठीक है, तो ये इफेक्ट क्या होता है? बॉल के नीचे अर्थ अलहदा रोटेट करेगी, यही इफेक्ट है? हाँ, यही इफेक्ट है। अच्छा, तो देखिए जरा कितनी अजीब सी बात नहीं आपने की कि हाइट और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, हाइट और डिस्टेंस इसके मुताबिक होंगे तो अर्थ उसके नीचे सेपरेटली मूव करेगी, और जब डिस्टेंस और हाइट इसके मुताबिक नहीं होंगे तो अर्थ स्टॉप हो जाएगी। ये कह रहे हैं आप? नहीं, जरा मैं ये तो नहीं कह रहा। सही है। नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ जब मुझे पहले मतलब तो यही मुझे पहले मेरा पॉइंट क्लियर करने दो। जब वो सरफेस ऑफ अर्थ को एस्केप करेगा तो उसकी वेलोसिटी को हम साथ रिटेन करेगा, लेकिन विंड रेजिस्टेंस और बाकी फैक्टर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी प्रोग्रेसिवली कम होती जाएगी, जिसकी वजह से अर्थ की रोटेशन और उसकी वेलोसिटी के दरमियान का डिफरेंस सिग्निफिकेंट होना शुरू हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा और कितनी हाइट पे ट्रैवल करेगा, और उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन अर्थ की रोटेशन से कौन सी ओरिएंटेशन शो करता है। ये वही आपने बात दोहरा दी, इसीलिए मैं बार बार रोक रहा था। ये आपने वही बात कह दी। जैसे ही बॉडी, as soon as the body leaves earth, any body, whether it be a ball, an aeroplane, a sniper's a bullet from sniper's rifle, कोई भी चीज है, as soon as that object leaves earth, whether it is going to move in the same reference frame or both of these things are going to move separately. आपने कहा कि ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स, तो भाई अर्थ रोटेट कर रही है कि नहीं कर रही है? डिपेंड करने का मतलब है कि एक हाइट होगी तो नीचे अर्थ रोटेट कर जाएगी, और अगर हाइट और डिस्टेंस अलग हो जाएगा तो फिर रोटेट नहीं करेगी, फिर वेलोसिटी आ जाएगी, फिर वो दूसरे वेरिएबल्स आ जाएंगे, विंड फैक्टर आ जाएंगे। ये किसी तरह से साइंटिफिक सेंस बनाता है? ये आप जरा खुद मुझे बताएं। जी हाँ, 100% सेंस बनाता है। उसकी वजह है कि रेस्ट और मोशन को हम लोग हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से ध्यान करते हैं। भाई कोरियोलिस क्या होता है? कोरियोलिस को डिफाइन करें। जब आप अर्थ में किसी बॉडी को एक स्ट्रेट पाथवे में मूव करते हैं तो बॉडी इनर्शिया की वजह से अपना स्ट्रेट पाथवे रिटेन करती है, और अर्थ की रोटेशन की वजह से वो अपेरेंटली एक डिफ्लेक्शन शो करता है उसके सरफेस के लिहाज से। इसे कोरियोलिस इफेक्ट कहा जाता है। डिफ्लेक्शन क्यों होती है? अर्थ की रोटेशन की वजह से। और बॉडी स्ट्रेट पाथ पे रहती है। अपेरेंट डिफ्लेक्शन। ठीक है, बॉडी स्ट्रेट पाथ पे रहती है। अच्छा, बॉडी स्ट्रेट पाथ पे रहती है। तो बॉडी स्ट्रेट पाथ पे रहती है। तो इसका मतलब है कि बॉडी के नीचे अर्थ मूव कर गई। हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं। तो फिर बॉडी के नीचे जब अर्थ मूव कर गई है तो फिर जहाज के नीचे क्यों नहीं कर रही? जहाज के नीचे भी तो आएगी ना। ये स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, बिकॉज द अर्थ विल देन ब्रिंग इट बैक टू द राइट फॉर यू। अब आपका एक रेफरेंस फ्रेम क्यों नहीं है? अब आपके दो रेफरेंस फ्रेम हो गए हैं। आप बताएं ना। बात दरअसल ये है कि आप बाकी फैक्टर्स को निगलेक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। अगर वो लैटिट्यूड के लॉन्ग मूव कर रहा है तो उन दोनों की वेलोसिटीज पैरेलल है, तब तो कोरियोलिस इफेक्ट हो ही नहीं सकता। क्या फर्क पड़ता? अब मेरे भाई उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारा मुद्दा उसकी वेलोसिटी से अच्छा, उससे बड़ा नहीं फर्क है। पड़ता है क्या? अच्छा साम भाई, अच्छा बड़ा फर्क पड़ता है। दो कार्स अगर सेम वेलोसिटी मैं मेरी बात सुनिए, दो कार्स अगर सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगी तो आप रिलेटिवली उनके दरमियान तो मोशन को ऑब्जर्व ना कर सकते। ऑब्जर्व करने की बात नहीं है। आपने कहा बॉडी स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, उसके नीचे बॉडी, उसके नीचे अर्थ मूव कर रही है। दो रेफरेंस फ्रेम होंगे, दो रेफरेंस फ्रेम होंगे। नहीं, अच्छा, ये एक ही रेफरेंस फ्रेम है। रेफरेंस फ्रेम एक रहा है, इसमें डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। डिफ्लेक्शन अर्थ को रेफरेंस फ्रेम के तौर पे अपेरेंट डिफ्लेक्शन, अर्थ को रेफरेंस फ्रेम के तौर पे लिया गया तो अपेरेंट डिफ्लेक्शन हमने बात की है ना। अगर रेफरेंस फ्रेम हम चेंज कर ले तो फिर तो अपेरेंट डिफ्लेक्शन की बात ही नहीं कर सकते। अगर हम स्पेस को या एटमॉस्फेयर को रेफरेंस फ्रेम बना दें तो स्ट्रेट पाथ सुने यार, आजम भाई बात कर सकता हूं? अतर साहब एक सेकंड, मुझे ये बताएं, ये आप कह रहे हैं कि हम रेफरेंस फ्रेम चेंज करेंगे तो चेंज करके बॉल के ऊपर आ जाएंगे ना। अगर हम बॉल के ऊपर बैठे हैं, ठीक है, तो फिर तो डिफ्लेक्शन होगी, फिर तो डिफ्लेक्शन नहीं होगी ना, स्ट्रेट जाएगा ना।
स्ट्रेट जाएगा हाँ, ना वो। लेकिन अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पे यूज करेंगे तब डिफ्लेक्शन होगी। खुदा का नाम है, व्हाट डज इट इंप्लाई, व्हाट डज इट इंप्लाई? भाईजान मैं बात कर सकता हूँ? आजम भाई मेरी बात इट सिंपली इंप्लाइज द रोटेशन एक ऑफ इट। सेकंड अतर भाई, एक सेकंड, इससे आप खुद यू हैव एग्रीड, यू हैव एक्सेप्टेड दैट द बॉल इज गोइंग सेपरेटली एंड द अर्थ इज रोटेटिंग सेपरेटली, आपने ये माना है ना? डू यू एग्री दैट ऑन दैट? यस, आप उसके ऊपर एग्री हैं, तो फिर मुझे बताएं कि फिर आप वन रेफरेंस फ्रेम की क्यों बात कर रहे हैं? दीज आर टू रेफरेंस फ्रेम्स, नॉट वन। नो, रेफरेंस फ्रेम वन नहीं है, इसीलिए तो मोशन की बात हो रही है। अगर आप दूसरे रेफरेंस फ्रेम को ले लेंगे तो ये रेफरेंस फ्रेम वन अब कैसे हो गया? अगर रेफरेंस फ्रेम वन है तो फिर बॉडी भी उधर ही जाएगी रेफरेंस फ्रेम वन है। रेफरेंस फ्रेम वन है तो हम अपीयरेंट डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं ना। अगर रेफरेंस फ्रेम वेरी कर जाएगा तो डिफ्लेक्शन ही नहीं होगी। रेफरेंस फ्रेम अगर वन है तो फिर तो आपको नजर ही नहीं आएगा कि डिफ्लेक्शन कहाँ से हुई है। सलमान भाई, यू आर गोइंग इन सर्कल्स एंड आई थिंक यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू ऐड एट दिस पॉइंट। आपने खुद मान लिया, सलमान साहब ने, अतर भाई मुझे इसका जवाब चाहिए, सलमान साहब ने खुद मान लिया। आजम भाई मेरी बात सुने जी, आजम भाई मेरी बात सुने जी, मैं सलमान भाई को जरा म्यूट कर दूं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। अतर भाई सलमान में म्यूट कर लें अपने पास से आप। हाँ जी चल आप अच्छा जी, मेरा पॉइंट सुन, अतर भाई मेरा पॉइंट सुन ले। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सुन ली मैं आप दोनों की बातें। मैं सुने मेरी बात सुने। मैं उसी सर्कल पे जिस पे अभी आपने क्लोज किया, मैं उस सर्कल पे नहीं घूमूंगा। मैं आपको एक और एग्जांपल सिंपल सी देता हूँ। आप सिंपल एक ट्रेन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, ओपन ट्रेन है, अभी हम हवा को निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हवा को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें क्योंकि उससे एयर रेजिस्टेंस आती है, उसके और दूसरे फैक्टर्स हैं कि एयर रेजिस्टेंस आपको क्यों मिलती है जबकि वो भी आपके साथ मूव कर रही है, ठीक है, बट लीव इट दैट वे। अच्छा, अब आप बात कर रहे हैं कि जी अब जब लैटिट्यूड्स पे आप शिफ्ट करते हैं ना, जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको कि आप 0 डिग्री लैटिट्यूड से 24 डिग्री लैटिट्यूड पे मूव करेंगे जहाज को, ठीक है। सऊदी अरब, ये जो रियाज है और पाकिस्तान का कराची है, ये 24 डिग्री लैटिट्यूड पे दोनों मौजूद हैं जो एयरपोर्ट्स हैं। हम बात करें अगर हम 0 से 24 डिग्री लैटिट्यूड पे मूव करते हैं, वहां पे आपको कोरियोलिस इफेक्ट मिलेगा, ठीक है, डिपेंडिंग कि आप कितने ऊपर तक लैटिट्यूड पे जाते हैं। अगर आप पैरेलल चल रहे हैं, मतलब एक ही लैटिट्यूड पे चल रहे हैं, लैटिट्यूड चेंज नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका कोरियोलिस इफेक्ट 0 होगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ आगे। मैंने आपको मिसाल दी कि एक ट्रेन चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, या आप कह लें कि 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप उस पर बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ना आप जल्दी पहुंच रहे हैं किसी आगे वाले पॉइंट पे उसकी सिमत में, या जो उसकी सिमत के मुखालिफ चलते हैं तब आप देर से पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा, आप उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हैं। अब आपने क्या किया, आपके साथ एक और ट्रेन गुजर रही है बिल्कुल जुड़ी हुई, उसकी स्पीड है 1500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, या आपने उसको अप्रोच कर लिया, समझे कि इन्फिनिट ट्रेन है। एक ट्रेन आपकी 1600 पे चल रही है जिस पे आप मौजूद हैं, साथ आपकी चल रही है 1500 किलोमीटर पर आवर पे, उससे ऊपर चल रही है 1400 पे, उससे ऊपर चल रही है 1300, 1200, इस तरह करते 0 स्पीड की एक इन्फिनिट ट्रेन खड़ी हुई है आपके साथ लाइन से पैरेलल, ठीक है। ये आपके लैटिट्यूड्स हो गए। जैसे ही आप मुझे बताएं कि आप 1600 वाली पे खड़े हैं, आप जैसे ही इसको जंप करेंगे 1500 वाली पे, तो आप क्या सेम पॉइंट पे लैंड करेंगे या आप आगे लैंड करेंगे 1500 वाली पे? हम आगे लैंड करेंगे, ठीक है। तो जो डिफ्लेक्शन की बात सलमान कर रहा है वो यही आपको बता रहा है, सिर्फ उसके बताने का तरीका मुख्तलिफ है। मैं आपको इसीलिए ना रियल टाइम एग्जांपल्स यूज करता हूँ, उससे ना चीज को समझना बड़ा आसान होता है। अच्छा, अब अगली मिसाल सुने कि उसी 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अब आप चढ़ गए, ठीक है, आप आगे जंप करेंगे, पीछे नहीं जंप करेंगे क्योंकि आपकी स्पीड ज्यादा थी। अच्छा, अब आप वहां पे खड़े हैं, खेल कूद रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप बोली जा रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है? Can anybody hear me? अहमद भाई, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आजम भाई, कितनी बात आवाज आई है मेरी? जी, मुझे आपकी आवाज, आप बोलते जा रहे थे, आपने एक एग्जांपल ट्रेन वाली दे दी, उसके बाद मैं आपको रोक रहा था, आप शायद हेलो जी आपको मेरी आवाज नहीं आई थी तो मैंने म्यूट किया। हेलो जी अहमद भाई, जी आवाज आ रही? कितनी बात आपने सुनी आजम भाई? अतर भाई, मैंने आपकी बात ट्रेन तक सुनी, उसके बाद शायद आपको मेरी आवाज। एक बात मुकम्मल हो गई है, दूसरी बात जो है उसका जवाब सुनना है आपने। आपकी जो एक बात हो गई ना वो ट्रेन वाली, तो अभी आजम भाई उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, आप वो सुने, फिर उसके बाद बात को कंटिन्यू करें। जी, मेरा ख्याल है अतर साहब का कोई डिले आ रहा है, तो मैं अतर साहब को यही कहूंगा। आजम भाई आवाज आ रही है आपको?
मुझे कोई म्यूट कर रहा है बार बार। अतर भाई अब आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज जी आ जी रही अब है? ये आवाज आ रही है। जी मैं म्यूट कर रहा था क्योंकि आपका डिले आ रहा है। आप हमारी बातों में एक दूसरे के ऊपर हो रहा था ना। आप मुझे सुन रहे थे ना मुझे आपकी आवाज आ रही थी। ठीक है, डिस्टॉर्शन इसलिए आ मैं रही है आजम भाई, बहुत ज्यादा आपकी आवाज बाउंस हो रही है। अगर बाउंस हो रही है आवाज तो कोई यूट्यूब से सुन रहा है तो उसको वो बंद कर दे, यूट्यूब को म्यूट कर दे, इसीलिए मैं कर रहा था। देखो अतर भाई, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने भी भाई वही आपकी बात। आवाज नहीं आ रही है आजम भाई। यार आपको, अतर भाई दोबारा ज्वाइन करो। अहमद आपके आपको कनेक्शन में आवाज आ रही? मसला है, साउंड में मसला है, आवाज बाउंस हो रही है, नहीं जी आ जी रही प्रॉपर। आजम भाई आप बात मुकम्मल करो, उनके पास डिले से पहुंच जाएगी। आप बात कंटिन्यू करो इनकी बात पर, जिन्होंने कहा है ना कि एक ही लाइन में मुख्तलिफ रफ्तार की ट्रेनें चला मैं दो इनको तो एक म्यूट से कर रहा हूँ दूसरे पे बॉल क्योंकि फेंकोगे। जी जी हाँ वो बीच में फिर बोल रहे हैं ना तो बात कंप्लीट नहीं हो रही है, इसीलिए मैंने उनको म्यूट किया। मैं म्यूट करता हूँ तो वो अपने आप को अनम्यूट कैसे कर लेते हैं? अच्छा, वो एक ही बात बार बार अभी मुझे भी ये पीछे से आ रहा है, कोई यूट्यूब के ऊपर इसको सुन रहा है, जो भाई यूट्यूब के ऊपर से सुन रहा है उसको वो कर दे, म्यूट कर दे और फिर स्ट्रीम यार्ड से इसको सुने। देखिए एक ही बात बार बार कर रहे हैं। मैंने नील डिग्रास टाइसन की वीडियो सामने रखी हुई है। नील डिग्रास टाइसन ये कह रहा है कि जब बॉल अर्थ को लीव करता है। जी मैं बात करूं, मेरा माइक फिर म्यूट हो गया था गॉड यार, आजम भाई मैं की कर तरफ से। रहा हूँ, ओह खुदा, इसको क्या करूं मैं अतर साहब का मुझे यार। आवाज, किसी की आवाज नहीं आ रही, ये मतलब देखो लाइव अहमद अर्ज मुझे का नहीं पता क्या क्या हो करें, रहा है। ये देखो जरा अच्छा बीच में बोल। आप बोलने जरा, उनको वैसी आवाज नहीं जा रही। अच्छा नहीं, मैं आपको आजम भाई एक बात करता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करें ना। देखिए सलमान भाई ने ये बात की है, वो भी ये कह के गए कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अर्थ का जब लेटीट्यूड मुख्तलिफ होता रहेगा ना तो जो रिफ्लेक्शन है वो जीरो होता जाएगा। मतलब जो जमीन की रोटेशन है ना, नॉर्थ पोल पे जाके जीरो हो जाएगी। हालांकि ये यही तो हमारा बात है। मुद्दा ही नहीं है। ये, एक मिनट, हमारा यही ये मुद्दा ही नहीं है ना सलमान भाई, आपसे भी मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये हमारा मुद्दा ही नहीं है, इस पे हम बात ही नहीं कर रहे। नहीं हम अहमद भाई, मुद्दा यही है, मुद्दा यही है। वो बात कर रहे हैं नहीं पेरेंट डिफ्लेक्शन की। इस बात लिहाज सुने से ना, बात तो सुने। वो जो जिस बात को इग्नोर कर रहे हैं ना, वो बात इग्नोर ये है कि जमीन अलहदा रोटेट करती है और जमीन से ऊपर उठने वाले जिसम अलहदा रोटेट करते हैं, जबकि खुद यूट्यूब की इनकी वीडियोस मौजूद हैं। इन दोनों का इकरार मौजूद है कि जमीन और एटमॉस्फेयर साथ चढ़ते हैं। अभी फिर अतर साहब ने यही बोला है कि ट्रेन में वो जो ट्रेन के अंदर वो जो क्या उसे कहते हैं, जो टी सर्व करती है, चाय सर्व करती है, कॉफी सर्व करती है, उसको कुछ नहीं होगा, मक्खी उड़ती है, बस में हम ट्रेवल करते हैं। तो ये बार बार यही बात करते हैं कि अर्थ और एटमॉस्फेयर एक साथ चलते हैं, अर्थ और एटमॉस्फेयर एक साथ चलते हैं। और भाई जब ये बॉल को किक करता है तब इसको मौत पड़ती है बॉल को अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ चलते हुए। फिर कहते हैं नहीं हाइट और उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसकी डिफ्लेक्शन बाढ़ में जाए। डिफ्लेक्शन हो किस वजह से रही है? डिफ्लेक्शन इस वजह से हो रही है, बॉल स्ट्रेट चल रहा है सेपरेटली, अर्थ रोटेट कर रही है सेपरेटली। उसने लिखा हुआ है सामने यार, आपके सामने लिखा हुआ है। नील डिग्रास टाइसन ठीक है, भी मैं कह रहा हूँ कि ये बात ये कर रहे हैं, ये जमीन की रोटेशन पर फर्क डाल रहे हैं कि अगर आप लेटीट्यूड मुख्तलिफ करते रहेंगे तो मुख्तलिफ होता रहेगा। हालांकि हम फिलहाल ये इस पे बात ही नहीं कर रहे कि भाई वो मुख्तलिफ करते रहे। अब एक ही लेटीट्यूड पे बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर 24 डिग्री पर अगर हम खत इस्तिवा जो दरमियान वाली लाइन है दुनिया की, उससे थोड़ा उसी पे चल लें, उसी को एक मिसाल के तौर पर ले लें, उस पर बात करें। ये एक अलग बात की तरफ जा रहे हैं कि अगर इसका लेटीट्यूड मुख्तलिफ होता जाएगा तो वो रिफ्लेक्शन ज़ीरो होती जाएगी। तो उससे तो हमारा काम ही नहीं। फिलहाल हम इस पर बात कर रहे हैं कि अगर कोई ज़मीन के बिल्कुल सेंटर वाले उस पर चल रहा है जहाँ पे लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात नहीं हो रही, बिल्कुल खत्ते सिवा के जीरो पे हम जा रहे हैं। हाँ। जी, वहाँ पर जब ज़मीन की जो स्पीड है उस पर बात कर लेना। आप उस तरफ क्यों जा रहे हैं, इस तरफ और उस तरफ? या ये कहना कि भाई लॉन्गिट्यूड पर असर करता है, लेटीट्यूड पे नहीं करता, इतने पे नहीं करता, उतने पे नहीं करता, जिस पे करता है उसकी बात कर लें। नहीं करता है। देखो फिर अहमद आप भी थोड़ा सा इसको आपको डिस्टर्ब करो। सलमान एक सेकंड सलमान प्लीज यार, वो अतर के साथ भी बड़ी डिस्टर्बेंस हो गई। वो उसका आगे पीछे डिले का मसला है तो इस वजह से मुझे उसको किक करना पड़ा। उसको मेरी तरफ से सॉरी कर देना, ठीक है? आज 14 अगस्त है तो सिग्नल्स का प्रॉब्लम आ रहा है कुछ, आई डोंट नो। अच्छा देखो सलमान, देखो अहमद भाई आप भी देखो पॉइंट डिफ्लेक्शन का नहीं है। सलमान ने भी बोला, अतर ने भी बोला कि अपेरेंट डिफ्लेक्शन होती है। पॉइंट, दिस इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये भी नहीं है कि जी द डिफ्लेक्शन इज जीरो। दैट डिफ्लेक्शन, दैट ऑब्जर्व, दैट ऑप्टिकल इल्यूजन इज जीरो एट द इक्वेटर, ओके? But why is there deflection in the objects
that are in the air is wall आजम भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब आ रही है, ज्वाइन हो गया हूं दोबारा। अच्छा मैं समझ रहा हूँ मेरे सिग्नल का जी सिग्नल का इशू है मेरा, वो डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा सा, आज सिग्नल का बहुत ज्यादा इशू है। ओके तो यही मैं बात बार बार कह रहा हूं कि यार जब एक बॉल है हवा में, वो कह रहा है कि उसको लेफ्ट में करके किक मारना, यही वो कह रहा है। बॉल हवा में है तो उसे लेफ्ट में करना, द अर्थ विल देन ब्रिंग इट बैक टू द राइट फॉर यू। अर्थ जहां पे तुमने गोल मारा है, उस गोल वाले जिसकी बास्केट है जिसमें बॉल जाना है, उसको राइट में ले आएगी। Why is it not applicable on the flights? For God's sake, यही कुलिया फ्लाइट्स पे क्यों नहीं लगाते? वहां पे आप कहते हो डिस्टेंस का फर्क है, लैटिट्यूड का फर्क है। भाई उससे तो डिफ्लेक्शन में फर्क आएगा ना, ऑप्टिकल इल्यूजन, देयर वुड बी डिफरेंस इन द ऑप्टिकल इल्यूजन। हम डिफ्लेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे। Why is there deflection? That's what we are talking about. जी सलमान। मुझे अहमद भाई के पॉइंट की समझ आ रही है। एक्चुअली वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम एक लैटिट्यूड से दूसरे पे नहीं मूव कर रहे, बल्कि एक ही लैटिट्यूड पे रह के मोशन की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो नील डिग्रेस टाइसन ने बात की है ना, मैं फिर वही पॉइंट रिपीट करूंगा कि जब हम ग्लोब की बात करते हैं तो उसमें हम 3 एक्सिस लेते हैं, बाय, एक्स और जेड एक्सिस। जब आप एक लैटिट्यूड को फिक्स कर लेते हैं, लेट्स सपोज जैसे इन्होंने कहा कि हम इक्वेटर पे हैं, यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड पे, बिल्कुल सेंटर पे, तो उस पर नील डिग्रेस टाइसन ने कहा कि आप बॉल को जो लेफ्ट या जो भी उन्होंने किक का डायरेक्शन आपको बताया, तो वो डिपेंड करेगा कि वो अर्थ की रोटेशन के लिहाज से उसका डायरेक्शन कौन सा है, यानी जेड एक्सिस के लिहाज से, जो कि अर्थ का के एक्सियल टिल्ट को के बिल्कुल पैरेलल है। जब प्लेन्स की बात की जाती है तो प्लेन्स भी कॉरियोलिस इफेक्ट को फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। आप उस मिसाल नहीं, हम उसके जरिए सिर्फ इतनी बात समझाना चाह रहे हैं, ये जो कि अगर उसके नीचे जो है ना जमीन घूम रही है, सिर्फ इतनी बात समझाना चाह रहे हैं। उसके ये लाजिम नहीं आ रहा कि आप उसको इस तरफ भी ले आओ कि भाई जहाज को भी आप इस तरह घुमाओगे। सिर्फ इतनी बात उससे समझाना चाह रहे हैं कि उसके नीचे जमीन घूम रही है। अब आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दरमियान में लाकर उसको जीरो उसकी वो कर ले डिफ्लेक्शन वगैरह, तो इसका मसला नहीं है। मैं आपको सिर्फ इसलिए कह रहा था एक्यूरेट अगर उस पर रहें कि दरमियान जीरो पे रहें, तो आप इस बात को छोड़ दें एक दफ़ा कि ज़मीन यानी गेंद की तरह जहाज़ भी हल्का सा जो है टर्न कर लेगा, स्विंग कर लेगा। तो वो बात बताना मकसद नहीं है कि उसी तरह जहाज़ करेगा या नहीं करेगा। फिलहाल पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको मैं जब भी कह रहा था कि आप उसको छोड़ दें, यानी ज़मीन के जो आप लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं कि भाई इधर जाएगा या उधर जाएगा, स्विंग करेगा या नहीं करेगा, तो किस पॉइंट पे करेगा किस पॉइंट पे नहीं करेगा, ये पॉइंट नहीं है। बल्कि आप सिर्फ ये देखें अगर किसी भी पॉइंट पे कर रहा है, उसी पे हम जहाज को उड़ाते हैं किसी और चीज़ को, क्या वो भी स्विंग करती है या नहीं। जैसे कि इन्होंने एक फ़्लाइट ली यहाँ से कराची से रियाज की, तो अब कराची से रियाज अगर कोई फ़्लाइट जा रही है और वो लॉन्गिट्यूड उसका सिर्फ 24 डिग्री के अंदर अंदर रहता है और वो ज़मीन के एंटी मतलब घूम रही है, ज़मीन जो है मशरिक की जानिब घूम रही है और वो मगरिब की जानिब घूमता है मिसाल के तौर पर, तो उसकी फ़्लाइट का टाइम के अंदर फ़र्क आ जाना चाहिए, क्योंकि ज़मीन उसकी जानिब मुखालिफ जा रही है, तो उसको उसके करीब जल्दी पहुंच जाना चाहिए। वो सिर्फ ये बात कर रहे हैं। अब आप उसका अगर लॉन्गिट्यूड फर्क ला रहे तो इससे कोई मसला तो नहीं होना चाहिए ना। आप कह रहे हैं कि आपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को कांस्टेंट रखा है, उनकी वेरिएशन आप नहीं ला रहे, जो आप एग्जांपल सपोज कर रहे हैं जिसे हम लेके चल रहे हैं डिस्कशन में। जी, उससे आपने सिर्फ इतना पॉइंट लेना है, उससे सिर्फ इतना पॉइंट लेना है कि उसके नीचे जमीन रोटेट कर रही है, जब भी तो वो सलमान शो कर रहे हैं ना। Hello, Salman. Can you talk in English? Arvind would like to talk to you. Is it okay for you to talk in English for a bit? Oh, sorry. I just had a question. I just had a question for all of you guys. Do you know exactly what Coriolis effect is? And if you look it up on a search engine, you know, what will it tell you? Do you know what Coriolis effect is? Because as an English internet person, I do everything in English. I found that if you look it up in Wikipedia, for example, you will get a very elaborate set of stories about Coriolis effect that are not Coriolis effect, right? What Coriolis effect is very simple.
and it is included in the wiki, but there's a lot of assumptions on top of that about actual deviations, and they call that Coriolis effect, like why weather moves the way it does, the toilet flush, right? All these stories, they call that Coriolis effect. But how is that, like, when you look it up in Hindi and your languages, does it also do they also have those explanations? I'm not sure. Yes. Yes, I'm we not also sure have same that explanations. Okay, go ahead, Salman. What's your question? We have same explanations. Did you understand? Yes, I can understand. Oh, so you did I said we understand my also have question? same explanations. Yes, you can ask. But did you understand my question? It was very long. It was a long story, but it's about when you look it up on internet, right? What Yes. will it tell you in your language? Does it, like the English, give you a story about Coriolis effect of actual deviation, not apparent deviation? Because Coriolis effect, apparent deviation, not actual. Arvin, yeah, Wikipedia tells Actually, us we- about the apparent deflection, not actual. We do get the same Wikipedia, but most of us we read every material in English because it's really easy for us to understand in English, because we are from very young age we are reading all the science material and all the mathematics in English, so it's really easy. Oh, really? Yeah. Oh, I did not know that. That's why most of That's us good. can. Yeah, that's why most of us can talk really good in English. So, Right, but you understand it because you read it a lot. So that I did not know that at all. So that's good to know. I myself have like really grown up with English. A lot of movies. Now it's kind of different, but back in the day, movies were always English. We had a lot of English spoken media and then Dutch subtitles. So we could learn it from the reading while we heard the English. And that was just like how we did it. And I learned a lot of English because of that. I realized like, oh, English is really big. I did not know that in Pakistan, they also do the schools in English. That's interesting. yeah, we really start learning in English at a really early stage. Like, चलो यार पॉइंट पे आ we- जाओ. okay, that's Come to the beyond the point. point. So yeah, Arvin, would you please talk to Salman, because Salman is again repeating that the Coriolis deflection is zero at the equator and it won't affect the plane flights. So Salman and Arvin, please continue. Yeah, that's Okay. just wrong. You're wrong. It's not. Like if the Earth was a spinning ball with a gas sitting on top of it, right? Then the gas would not move with the rotation because gas doesn't have momentum. No matter how hard or how long you spin it, even in a Here you closed committed a system, mistake. it's not gonna Here you committed a mistake. end up moving the same Salman. speed. Salman, please let Arvin complete, and Arvin will give you a chance to respond to him. Okay. Yes, sorry. Look, gas cannot have momentum. It will not, no matter how hard or how long you spin it, gas will not move the same speed as liquid or solids. It doesn't do that. So it cannot move with the rotation of a presupposed ball Earth. It is impossible. That's why Neil deGrasse Tyson doesn't claim that, because he claims deflection. The ball moves when it is thrown because of Coriolis deflection. That is in a world where the gas is not moving with the rotation. It's impossible. Okay, Salman, please respond. Actually, Arvind, here you committed a mistake. The atmosphere of Earth is continuously moving with the surface of the Earth because of its wind resistance and viscosity. You ignored this point. Viscosity and wind resistance cause the atmosphere to move along the Earth.
here you commit a mistake. Secondly, my point was that if you are keeping longitudes and latitudes constant, then there will be no Coriolis effect, because when you move from a lower latitude to higher latitude, or from a higher latitude to lower latitude, actually the circumference of latitudes vary. Because of varying circumferences, the rotational velocity also varies, due to which you observe a deflection. For example, you are standing on a train which is moving with a speed of 100 meter per second, and then you jump to the other train which is moving the speed of 90 meter per second. The difference between the speeds of those two trains will be just 10 meter per second, and your deflection will according to that speed. The same is the case with Earth. As you move from lower latitude to higher latitude, or from higher latitude to the lower latitude, the variation in rotational velocity occurs because the circumference of the latitudes vary. Therefore, we observe Coriolis effect. But when latitudes and longitudes are assumed constant, as Ahmed said, then there will be no Coriolis effect. Did you get my point? Wow. Yeah, I heard you. But So- that is incoherent. I mean, you translated How? it well enough. You translated well enough in English, but it doesn't make any sense. I mean, there is either Coriolis deflection or there is not. Either there is Coriolis effect because the Earth is spinning underneath the gas and we see a deviation, or there is not. Because if one thing is deviating, then all things in the air not connected to the moving reference frame, the Earth's ball, if it's not connected, then it's going to deflect. One thing deflects, all things deflect. They don't. So there might be some aberration here and there measured, and like, oh, there seems to be a deviation. Well, there's also wind streams, which have nothing to do with the Coriolis deviation because they don't comport with the globe model, the wind streams above. Yeah, it's not the same pattern. It doesn't match. At one point it goes one direction, at the other point it goes the other direction. That does not make sense with a spinning ball. Okay? So Yeah, Arvind, you either have there is some more- Coriolis deviation or there is not. I rest my case. Yeah, Arvind. Yeah, definitely. That's what we have been talking about. And Michael Khan, that's a really beautiful name. Michael has asked in the comments, ask him if the stars stand still at the equator. So, सलमान, यही सवाल मैंने आपसे पिछली स्ट्रीम में भी पूछा था. आप कह रहे हैं कि इक्वेटर के ऊपर हमें नजर नहीं आएगी, जबकि आर्विन भी यही कह रहा है, मैं भी कब से ये कह रहा हूँ, नील डिग्रास टाइसन भी यही इम्प्लाई कर रहा है कि द अर्थ मूव्स अंडरनीथ द गैसेस सेपरेटली, these are not joined together. अब आप कह रहे हैं कि because of these factors we will not see a deflection. We don't care if we don't see the deflection. All that is implies from Coriolis that the earth moves separately, independently from the objects in the air. हवा अगर वो independently move ना करती होती तो नील डिग्रास टाइसन कभी भी ये नहीं कहता कि बॉल को इधर से एडजस्ट करो, कभी भी जहाज को ये नहीं कहा जाता. अब सैयद अख्तर साहब ने लास्ट टाइम कहा था कि जहाज नॉर्थ और साउथ में जब जहाज ट्रैवल करते हैं तो the planes they adjust their course. Let me ask you this question. If we are in a helicopter and we just go above certain height and we don't adjust for the Coriolis and don't adjust for the deflection, should our destination come to us, right, Salman? हमारी destination को हमारे पास आ जाना चाहिए ना. इसका आंसर करें. Firstly, the destination either helicopter is floating in the air or is it moving? When Is it they're floating? hovering still, are they Still are they hovering? No. horizontal? Sorry. No, Yeah. destination will not come. When Destination they will not hang come. still, are they horizontal or are they slanted because they are correcting for a deviation? Are they horizontal? Is the tail of the helicopter horizontal when they hang still? No. No. I didn't get your point. What do you want to say about the tilt? I mean, why are you talking taking about tilt in an account? You said that it is floating stationary.
Coriolis correction, right? The helicopter is correcting for Coriolis deviation because the Earth is spinning underneath. Well, if it wants to keep in lockstep with the Earth, it would have to turn to go in a direction, to go against the spin, to stay parallel, right? So it's going to be turned. It's going to move in a direction. Well, a helicopter that I see hovering somewhere above, it's perfectly horizontal. It's not correcting for anything. It's just hanging there, perfectly horizontal. It's not seeming to have to correct for Coriolis deviation. Yeah, exactly. Arvind, in the last stream, our friend Athar and Salman both were of the point that if the planes were moving from, towards north or towards south, they have to adjust for the deflection. If they don't adjust for the deflection, the land will go somewhere else and the plane will go somewhere else. And I asked them, yes, what if they don't? What if they don't adjust? What if a helicopter don't adjust? Why then the earth will not come under the helicopter? सलमान, अगर वो एडजस्ट नहीं करेंगे तो जमीन क्यों नहीं आएगी उसके नीचे? बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे नील डिग्रास टाइसन ने कहा कि भाई अपनी किक को, अपने बॉल को एडजस्ट करो, उसके नीचे जमीन आएगी. That's the last point. Well, you just have to wait 12 hours and you are on the other side of the globe. Exactly. यही बात है और यही पॉइंट है. 1 घंटा हो चुका है. We are at the limit of our stream. It's been 1 hour. Again, I would like to thank all the members, and I would like to give a shout out to Arvind, all my Pakistani friends, all who are seeing it right now, Salman, Athar. I would like you to go visit Arvind's channel, go visit Flat Earth Debate. They are live there every day, and they are talking about all these things every day. They have been doing so, I don't know, for like 5 to 6 years now. Nathan has like 1600 more than 1600 live debates. So I guess I have taken everybody's point. Ahmed and Ali, if you want to say something, that would be great. So please, Ahmed और सलमान, Ahmed और Ali, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज ऐड कर लें और उसके बाद हम स्ट्रीम को खत्म करेंगे. अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि सलमान ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये यही बात कर रहे थे ना कि लैटिट्यूड से उसके अंदर फर्क आ जाता है डिफ्लेक्शन के अंदर. जी देखिए, सलमान और अतर भाई 2 स्ट्रीम से वही चीज कर रहे हैं और हमारे पॉइंट को बार बार इग्नोर कर रहे हैं. लैटिट्यूड से फर्क आ गया, ठीक है. जब भी तो मैं तो इसी पॉइंट पे ला रहा था कि लैटिट्यूड अगर आप उसका चेंज नहीं करें, सिर्फ एक ही सीधे में रखें, तब भी तो फर्क आना चाहिए. नहीं, फर्क को छोड़ दें आप, फर्क को छोड़ दें, क्योंकि जमीन नीचे से घूम रही है ना, जमीन जब नीचे से घूम रही है तो फर्क आना चाहिए. इस पॉइंट को लें बस. नहीं इस तरफ क्यों जा रहे हैं कि लैटिट्यूड इधर कम हो तो जीरो हो जाएगा, ये होगा वो. जो उनका मॉडल है, अगर सिर्फ उसी को देखा जाए तो जो इक्वेटर है ना, उसके ऊपर अपैरेंट डिफ्लेक्शन, ये जो मुड़ना है ना, वो नजर नहीं आता. लेकिन पॉइंट उसका तो है ही नहीं है. देखिए मेरी बात सुनिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, मुड़ना नजर ना आए वो एक अलग बात है. अगर हम जमीन के लैटिट्यूड चेंज होने की वजह से उसका डिफ्लेक्शन मान रहे हैं, क्यों? क्योंकि जमीन उसके नीचे मूव कर रही है. मैं उनको यही कह रहा था कि जब जमीन मूव कर रही है, आप सिर्फ इस पॉइंट को लो. यही बात है, बस यही बात है. अतर साहब ने भी लास्ट टाइम कहा था और अभी हेलीकॉप्टर का भी यही पॉइंट है कि, और नील डिग्रास टाइसन की स्क्रीन मैंने इसीलिए रोकी हुई है. अच्छा, इस पे कोई वजह नहीं बता रहे कि जहाज के नीचे क्यों नहीं घूमती? वो इसलिए वजह बताएंगे तो जमीन साकिन है ना, वजह बताएंगे तो अर्थ स्टेशनरी. वजह क्या बताएं? उधर आते हैं जहाजों की फ्लाइट के ऊपर आते हैं तो कहते हैं जी ये फर्क बता रहे हैं कि डिफ्लेक्शन कम होगा या नजर नहीं आएगा. इस पर क्यों जवाब, इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे कि भाई जहाज के नीचे क्यों नहीं मूव हो रहा? यही तो बात है. वो कहते हैं अर्थ, जैसे माइकल खान ने कहा कि अगर आपके इक्वेटर के ऊपर अर्थ मूव नहीं करती, क्या आपको सितारे घूमते नजर नहीं आते? जब हम सितारों को देखते हैं तो साइंस में हमें क्या पढ़ाया जाता है? When we see the stars and it is told to us that no, the stars are not moving, your earth is moving. तो इसका मतलब है, it means that when we are at the equator and there is no apparent deflection, then the stars, it means that stars are not moving. Doesn't make sense, yaar.
किसी तरह से सेंस नहीं बनता। सितारे भी तो गोल गोल राउंड डिफ्लेक्शन लेते ही हैं ना। नहीं, सेपरेटली अगर सब मूव कर रहा है, अगर हवा जो है अपनी सेपरेट मूव कर रही है, जमीन अपनी सेपरेट, तो हम तो सिर्फ इस टाइम ये बात कर रहे हैं जो जमीन अपने गिर्द घूमती है। अगर सूरज के गिर्द घूमना देखें तो जहाज को तो जमीन से अलग ही हो जाना चाहिए। नहीं, सूरज का तो वो तो अभी तो मामला हमने छेड़ा ही नहीं। अगर सूरज के मामला छेड़े तो वो तो हाँ। अगर अब फिलहाल तो अभी एक मोशन पे बात कर रहे हैं ना कि इस हिसाब से जहाज को खुद पहुंच जाना चाहिए। अगर जमीन के सूरज के गिर्द माने और जमीन जो खुद आगे भाग रही है, जहाज बेचारा तो अभी तक ब्लैक होल के पास होना चाहिए। Okay जी, okay everyone, thank you so much. It was a real pleasure. I was really excited to have Arvin on my stream, and it was a real pleasure. So yeah, thank you so much, and have a really nice weekend. Take care. Bye. The pleasure was all mutual. Thank you.